A lot of people want to make money online, but उनके पास लैपटॉप नहीं है. So they ask me, क्या मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कौन से स्किल्स या सर्विस ऑफर करें? The truth is, मैंने भी बस एक फ़ोन से स्टार्ट किया था. So in this video, I will show you where you can find clients, what services you can offer through a mobile, and which apps you can use. The first question is, कौन से सर्विसेज मोबाइल से ऑफर कर सकते हो? Number one is content writing. There is no doubt that content writing is the easiest service that you can offer through a phone. Coming to the apps you can use, तुम Google Doc डाउनलोड कर सकते हो जिस पे टाइप कर सकते हो एंड यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी तुम्हें मिल जाती हैं लाइक बुलेट पॉइंट्स एंड हेडर्स. पर्सनली मैं नोटपैड यूज करता हूँ एंड आई यूज द स्वाइप फीचर. इससे कम एफर्ट में मैं ज्यादा टाइपिंग कर पाता हूँ. कमिंग टू फाइंडिंग क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए तुम फेसबुक ग्रुप्स एंड लिंक्डइन भी यूज कर सकते हो. इफ यू आर स्टार्टिंग आउट देन इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप्स भी ढूंढ सकते हो एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थ्रू योर मोबाइल फोन. फॉर एन इन-डेप्थ ट्यूटोरियल ऑन कंटेंट राइटिंग यू कैन चेक आउट दिस वीडियो. डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा. द सेकेंड स्किल टू ऑफर इज वीडियो एडिटिंग. तो अगर बेसिक एडिटिंग करना है, यू कैन इजीली एडिट रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इवन फेसलेस वीडियोस ऑन योर फोन. Some of the popular apps that you can use are Kinemaster, Inshot, Capcut and VN. For a detailed tutorial on video editing in your phone, the link will be in the description. Now, coming to clients, you can get started on Facebook groups related to video editing and LinkedIn. You can reach out to many creators who need video editing services like this. Skill number 3 that you can offer is graphic designing. You might not believe it, but you can design YouTube thumbnails, Instagram posts and social media graphics, वो भी अपने मोबाइल पे. I still use Canva to design blog banners and social media posts for myself. Just have a look. Yes, इस लेवल के डिजाइनिंग सीखने में टाइम लगता है, but you can definitely get started on your mobile. Graphic designing सीखने के लिए I will attach a resource in the description. If you're finding this video valuable, hit on the subscribe button so you don't miss out on more content like this. Clients ढूंढने के लिए you can use Facebook groups, LinkedIn and Instagram. You can even reach out to people via email. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. You just have to reach out to people who might need your services या जिनके डिजाइन्स इंप्रूव हो सकते हैं. Show them your skills or offer them a free sample. Now, number 4, coming to an interesting skill that is social media marketing. If you are a social media marketer, तुम्हारा काम होगा कंटेंट कैलेंडर बनाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, डीएम्स पे रिप्लाई करना एंड टीम मेंबर्स को मैनेज करना. एंड ये सब कुछ कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल. योर वर्क विल बी सेंटर्ड अराउंड सोशल मीडिया एंड हम सब जानते हैं सोशल मीडिया इज मोर कन्वीनियंट ऑन मोबाइल. सोशल मीडिया एप्स तो तुम्हें यूज करना आता ही होगा. Plus, you can use Google Sheets and Google Calendar to organize everything. Coming to clients, तो वो तुम्हें LinkedIn पे मिल सकते हैं या cold emails से भी मिल सकते हैं. You can also join Facebook groups related to social media management जहाँ तुम्हारे ideal clients होंगे. I will attach a tutorial to learn more about SMM in the description. Coming to the end, I would say that don't chase perfection. इस स्टेज पे your focus should be on getting started. Obviously, लैपटॉप पे काम करना ज़्यादा convenient है, but मोबाइल पे भी start कर सकते हो because your client cares about only one thing, the value that you give to them. So, take it slow and simple and start with whatever you have. अगर बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में जानना है with examples, then check out this video.